which is an aspirational district, and sir, which is one of the educationally and socio-economically backward districts of our country. Sir, I had submitted a start question which is also listed at number 14 today on this very issue, but because it's unlikely to come up, I decided to submit a 0 hour as well, and thank you for admitting it, sir. I had raised this issue on 10th of February 2022 as well, sir, because of the criticality of the issue. Sir, in its reply, the ministry has said that in the country there are 6,558 teaching and 15,227 non-teaching posts that are vacant in central universities across the country. These are huge numbers, sir. But, sir, I must compliment the government that for the first time since independence, the educational budget provisions have crossed 1 lakh crore. So, definitely we need to compliment the government. And, sir, we have a very competent education minister. So, I really hope that, sir, the ministry will fill up the permanent vice-chancellor post at the earliest, will speed up the process of filling up this teaching and non-teaching posts at the Central University of Koraput and across the country, and also have an institutional mechanism, sir, so that such large number of vacancies do not pile up, because education is the foundation of our nation, and we need to really take care that these vacancies don't add up. Thank you, Kumarji. Thank you. Sri Vinay Viswam. Yes, sir. So the gravest issue in the country, I am sure all will agree to me, is unemployment. The data, no need to explain, because no data are correct. It's on the increase day by day. But when the pandemic came, we could see lakhs of people who were unemployed, who were employed, became unemployed on a day, and then it continued. And their numbers are very, very high. Sir, how they are leaving? This country has the right and a duty to ask it. How they are leaving? I should say they are not leaving. They are just surviving. Around us, they are surviving. In this Amritkal of India, lakhs of people, maybe crores, living in a difficult situation, has the right to ask us for whom we are running this country, for what we are ruling this country. Forget the politics. Sir, cutting across all the political spectrum, the people are having this problem, unemployment to these people. So the pandemic affected people, and their numbers are becoming higher and high. I believe that the government has a duty to think of them. I suggest the government, request the government to make a plan to support them, to give them some wages of support. And publish employment calendar. Of course, that also is a must. Publish an employment calendar and give them a support base and give them a wage system, and urgently depute a committee to look into the matter, and that committee should come with a report with minimum time, maybe 3 or 4 months. And in this way, we have to be with them. The country has to tell them that they are not forgotten. The country is with them. With this words, I request you and the government to take the matter very seriously. Thank you, sir. Please. Now you realize the importance of 0 hour and its utility also. Please see to it that 0 hours are not disturbed. To all. Dr. M. Thambidore. Thank you, Chairman, sir. Through you, I request the government of India to restore the Kachethi issue, to safeguard the rights of fishermen of Tamil Nadu. Since unilaterally ceding the Kachethi to Sri Lanka under the Indo-Sri Lankan Marine Agreement in 1974, the safety and livelihood of Tamil Nadu fishermen have been at the stake. Sri Lankan Navy, firing upon their boats, injuring and killing of fishermen and seizing their boats and fishing nets have been going endlessly. Many times are fishermen brutally beaten and put in the Sri Lankan prison illegally. That is why our late former Chief Minister Prachitalavi Amma went to the court, the Supreme Court in 2008 to declare Indo-Sri Lankan Marine Agreement 74 is illegal. Repeated assurances of the government at the center and diplomatic level talks did not
deter Sri Lankan Navy for attacking the fishermen. Our late Tamil Nadu Chief Minister Purachi Amma and now former Chief Minister of Tamil Nadu Edappadi Palaniswamy has written so many letters to the central government to requesting that this has to be Please, solved please. quickly. Shivaji, Sri Lankan Navy unilaterally rescinded all bilateral provisions of the agreement that protect the traditional fishing rights of fishermen. Therefore, I repeat to our government through you, sir, to rescind the Indo-Sri Lankan Maritime Agreement and take back Kachetivu, which is the part of our Indian territory, which is unnecessarily given to the Sri Lanka. This is the appropriate time. Government has to interfere and see that to get back our thing and save the Tamil Nadu fishermen, sir. Thank you right, very much. thank you. There is no controversy in this. You wanted to add one more former Chief Minister's name? No? Nine. Please, please, Shiva, please. Right, okay. Please, please. Time. Right, Shiva. Let us not make controversies out of non-controversy. Srimati, please, no comment, no side comment. Please try to understand each other's point of view. If you have difference of opinion, at an appropriate time you can express it also. Srimati Priyanka Chaturvedi. Much Honorable Chairman, sir. When I called Priyanka Chaturvedi, I found Srimati Kanimoji standing. So I was... your colleague is saying something. All the Srimatis were confused, sir. All Srimatis. No, she got a point. She was in the front this row. That's why otherwise... Sir, I would want to draw the House's attention towards some sections of the Hindu Succession Act not being in favor of women. Under the gender-based rules governing the devolution of property, the relatives of a woman's husband have a stronger claim to her property than her parents and siblings. However, this is not true of the property belonging to a man. The present scheme of devolution keeps all the man's property within his natal family. This is inconsistent with equal treatment by the state as envisioned in Articles 14 and Article 15(1) of the Constitution of India. So this anomaly under the Hindu Succession Act also... Derek ji, please go to your seat. You can call him afterwards, after the House is adjourned, discuss also, no problem. So it also goes against India's commitments under the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Removing gender-based discrimination property-related legislation is one of the core requirements of CEDAW. The Supreme Court of India has also noted that a judicial or legislative intervention is necessary to remedy it. There are two ongoing cases where this issue is being considered. However, the legislature is the appropriate forum for amending legislation. We should not be looking towards the courts for policy decisions. Therefore, through this August House, sir, I urge the government to relook and revise these unfavorable sections of the Act and provide long due respite and rights to the women affected by these archaic rules, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Whoever want to associate, please send your name. Dr. K. Keshava Rao. Thank you, sir. Sir, it is a small issue, but a serious issue as far as Telangana is concerned. Sir, you know Adilabad, the most backward districts in the country, and it has a 48% of the tribal population in an ordinary state. It did not have any factories at all. It had two factories. Two were closed. One, after a very great struggle, the paper factory had come back. Now there is a cement industry, ICC. What we are saying is it is also closed. First it fell sick, then it was later closed. It has its own land. It has 750 acres, then 1,200 leased land. It has lime deposits of 48 million tons. It has water because Godavari flows from there. Then it has also electricity because Telangana is full of electricity. It has labor. What happened when it was closed? The BIFR closed it
closed it and gave VSS also to the employees. Then the employees went to the court, got it stayed. So still people are on the rules as far as this factory is concerned. Now the Chief Minister has requested the central government Prime Minister that he is prepared to pay the equity. Mr. Gadkari, during his discussions, said that NHI can take benefit out of this cement factory, so let us do it. This factory will be helping Marathwada, Vidarbha, and also the northern Telangana. So this employees issue, then the cement, much needed cement, NHI wants to join. We want to give, not only if they want more land, we'll give land. Whatever the central government wants, we would give that. And we will join in equity also. NHI wants to join in equity. So everything is straight. So let us try to concentrate on this and try to revive it, because in the court, still the people are on the rolls. That means they are employees, They did not take their money back. Thank you, sir. Thank you, Keshav Sri Kailash Soni. माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से लोक स्वास्थ्य के, लोक महत्व के अत्यंत व्यवहारिक पक्ष की तरफ आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अभी कोविड में अनुभव आया, बहुत से प्रांतों के समाचार छपे, वेंटिलेटर से लेके अन्य सारे यंत्र हमारे इसलिए खराब हो गए कि मानव संसाधन नहीं था। मैंने भी मध्य प्रदेश में अपने जिले में 5 डिजिटल एक्सरे मशीन दी, उनके लिए अभी तक ऑपरेटर प्राप्त नहीं हुए हैं। और ये अपने ऑक्सीजन प्लांट, दीगर करोड़ों की मशीनें इसलिए खराब हो जाती कि तत्काल भर्ती के नियम इतने कठिन हैं कि इसमें समय लगता है। आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल थोड़े समय के लिए ये एमपी लैड्स में ये विधान कर दिया जाए। मैंने राशि दी थी, प्रावधान न होने के कारण वापस आ गई। मशीनें अकेले इलाज नहीं करती, आदमी की बहुत जरूरत है और तत्काल, ताकि करोड़ों की मशीन तुरंत उत्पादकता दे। इसके लिए एमपी लैड्स में 2 माह के लिए ये मानव संसाधन के लिए भी नियम बनाया जाए कि इसमें ये खर्च किया जा सकता है। धन्यवाद कार्य जी। नेम्स एंड श्रीमती पूर्व देवी नेतम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक महत्वपूर्ण विषय पे आपके माध्यम से सदन को ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति को आगामी 10 वर्षों तक रखने की आवश्यकता के संबंध में है। महोदय, जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद टैक्स नीति पर राज्यों की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है और राजस्व बढ़ाने के विकल्प नहीं बचे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी। महोदय, छत्तीसगढ़ नवनिर्माण राज्य है और देश को अर्थव्यवस्था के विकास में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से वर्तमान में चल रहे जनहित के कार्यों और विकास कार्यों पर प्रभावित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र की इस निर्णय के आगामी वित्तीय वर्ष में अकेले छत्तीसगढ़ को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। यह समस्या अकेले छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि और भी राज्यों की इस संबंध में कमी आ सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को पत्र भी भेजे गए हैं इस संबंध में। अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उभरने के लिए और राज्यों की जीएसटी का यथोचित लाभ मिलने तक कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति को जारी रखा जाए। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी। धन्यवाद। Send the names. श्रीमती ममता महंतो स्पीक इन ओडिया। धन्यवाद सभापति महोदय। मु सदन माध्यम
ओडिशा राज्यर मयूरभंज जिले में शिमिलीपाल अभयारण्य उपरे मान्यवर जंगल मंत्री एवं पर्यटन मंत्री ध्यान आकृष्ट करने को चाहूँगी। सभापति महोदय, शिमिलीपाल को 1979 मसीह ओडिशा सरकार अभयारण्य भाव घोषणा करते। 1980 मसीह 2750 वर्ग किलोमीटर अरण्यर निर्दिष्ट 845 वर्ग किलोमीटर अंचल को जातीय उद्यान मान्यता देवाकू प्रस्ताव दि जाइथिला। यह भितर शिमिलीपाल रे आरंभ हो सारी व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प। एथि निमंते एठाकू बाहर आसुथिबा अधिकारी को साहाय्य सहयोग पाई केतेक स्थानीय लोकंकु आनी विभाग पक्षरु कोर अंचल रे रखा जाइथिला, किंतु उक्त अभयारण्यर कोर अंचल को जनबसती शून्य करा जाई नथिबारु ए पर्यंत शिमिलीपाल एक प्रस्तावित जातीय उद्यान भाव रही जाइछि। एणु तुरंत शिमिलीपाल को जातीय उद्यान रे मान्यता दि जाऊ। सेहीपरि पर्यटन विभाग शिमिलीपाल रे पर्यटन शिल्प प्रतिष्ठा पई उद्यम करा जाऊ, कारण एठारे पर्यटन शिल्प प्रतिष्ठा हेले जिल्लार शिक्षक बेकार युवक युवती नियुक्ति पाइबे। यह हेले जिल्लार अर्थनैतिक और सामाजिक अभिवृद्धि घटिबो। एठारे परिचालनागत त्रुटि जोगु प्रति वर्ष ग्रीष्म समय रे निया लागुची, वर्तमान मध्य लागिची। फल एठारे थिबा बाघ, हाथी, अन्यान्य वन्यप्राणी समते जीव जंतु उद्भिद पशु पक्षी सरीसृप जीवन विपद रे रहुची। शिमिलीपाल संपर्कित खबर जातीय माध्यम गणमाध्यम न आसिबा दुखर विषय। गत वर्ष मु मध्य निजे शिमिलीपाल निया लिभाइबारे उद्यम करिथिली, तेबे एठारे निया लागिबा मनुष्यकृत होइथिबारु एहार स्थायी समाधान दिगरे पदक्षेप निया जाऊ, जहा फल रे परिवेश बंचिबो और आमे मध्य बंचिबा। तेणु मु सदन माध्यम रे निवेदन करुची, एहाको गुरुत्व सहित विचार करी स्थायी समाधान करा जाऊ एवं शिमिलीपाल को जातीय उद्यान मान्यता दिया जाऊ। धन्यवाद। The translation, simultaneous translation is there. That's why. Sri Madam Dora Sen. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak on my subject of 0 hour, demand to save the jute industry of our country by the central government. हम देश की और बंगाल की एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट कुछ इधर बोलना चाहते हैं सर। रॉ जूट एक नेचुरल फाइबर है और बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इसमें कारपेट से लेकर जियो टेक्सटाइल तक डाइवर्सिफिकेशन के भी स्कोप भी है जूट बैग के अलावा। और जियो टेक्सटाइल रास्ता से लेकर रिवर बैंक को भी लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं। और जूट मटेरियल को एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी रेवेन्यू अर्निंग भी हो सकता है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है सर, और जूट एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी है। और एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री इंडिया हमारे भारतवर्ष सेल्फ सफिशिएंट भी है दोनों तरफ से जूट में। और जूट इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव भी है। बंगाल में 10 करोड़ के अंदर 2.5 करोड़ पॉपुलेशन ये इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। सर फिर भी जूट इंडस्ट्री बहुत क्राइसिस पे है सर, अभी किसी दिन तक बहुत सारे क्राइसिस में, क्योंकि 1987 में जो मैंडेटरी जूट पैकेजिंग एक्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, वो डाइल्यूट होने जा रहा है। अभी जब सब चीज की कीमत बढ़ रही है तब 2016 से 7 साल तक जूट बैग का प्राइस टैरिफ कमीशन ने बताया हुआ, फिर भी ठीक किया, फिर भी वो रेट पे नहीं कम रेट पे लिया जा रहा है, खरीदा जा रहा है जेसीआई से एफसीआई के लिए। और रॉ जूट प्राइस को भी ₹7200 से ₹6500 तक कम करना है, ताकि इंडस्ट्री रॉ जूट खरीद के जूट मिल चला सके। लेकिन जूट ग्रोअर्स को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। लेकिन ये सब ना होते हुए 15 जूट मिल्स अभी बंद है, 60,000 जूट वर्कर्स बेरोजगार है सर, और इसके असर जूट का फार्मर्स के ऊपर, ग्रोअर्स के ऊपर भी पड़ेगा। और हर्षियन जूट बैग 4.81 लाख बेल का कम हो गया, इसीलिए 1,500 करोड़ रुपया का घाटा हुआ, इस सीजन पे लॉस भी हुआ। तो मैंडेटरी जूट पैकेजिंग एक्ट को जो डाइल्यूट करा जा रहा है फूड ग्रेन्स को पैकेजिंग के लिए,
और शुगर को भी 100% से 20% पैकेजिंग में डाइल्यूट किया गया, ये ठीक नहीं है। और इस साल बजट में भी इस पर कुछ बोला नहीं, तो हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से हम आर्ज करते हैं कि ये ध्यान दें ताकि जूट इंडस्ट्री, जूट फार्मर, जूट वर्कर्स बच जाए। थैंक यू चेयरमैन। Thank you. Thank you. We are taking up the Suresh Gopi's Jurawar on priority because the interpreter has come from Lok Sabha for the other one. He will complete this also and go back. Sri Suresh Gopi. ഒരുപാട് നന്ദി സുരേഷ് ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ, രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷന് മലയാളം ഒരുപാട് നന്ദി. നമസ്കാരം. Translation ആയി. എനിക്ക് ഈ ടേമിൽ കിട്ടുന്ന അവസാനത്തെ അവസരമാണ് ഈ 0 hour സബ്മിഷൻ. ഞാനത് I didn't say last. Please. ഈ ടേമിലെ അവസാനത്തെ അവസരം. സർ, ത്രൂ യു സർ, സോറി. ആൻഡ് ഇത് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് उन्होंने ऐसा बताया अंतिम 0 hour सबमिशन होगा इस तरह में। अंतिम क्यों है? തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനും കലക്കത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്കും സമർപ്പണമായി അവരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും നല്ലവരായ മലയാളികളെയും അവരുടെ സമർപ്പണമായി ഈ നിവേദനം ഞാൻ കേന്ദ്ര വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. സർ, വളർത്ത് ആനകളുടെ വാണിജ്യ വിൽപ്പന, കൈമാറ്റം എന്നിവ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് 1972 നിലവിൽ വന്ന വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഒരു ഭേദഗതി വരുത്തിയിരുന്നു. അത് കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രീയ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലെയും മുസ്ലിം ആഘോഷങ്ങളിലെയും ഒക്കെ ആനയുടെ സാന്നിധ്യം, എണ്ണം വളരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇത് ഒരുപക്ഷെ ആനകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന, ആനകളെ അത്യധികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായി ആന സ്നേഹികൾ, മൃഗസ്നേഹികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില ഭീഷണികളെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയാണ് പല ഭേദഗതികളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള ആനകളെ എഴുന്നള്ളിച്ചുള്ള തൃശ്ശൂർ പൂരം, തിരുവമ്പാടിയിൽ നിന്നും പാറമേക്കാവിൽ നിന്നും 15ഓളം ആനകൾ വീതം അലങ്കരിച്ച് ആദരവോടെ ആചാരപൂർവം ഇൻ പ്യുവർ റിച്വലിസ്റ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക്സിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആനകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ആനകൾ ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രെയിലറിലും ലോറിയിലും കയറ്റി വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അതുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലുള്ള ദ്രോഹം ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിയോടും മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ബീഹാറിലെ സോൻപൂർ മേള അടക്കമുള്ള വേദികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ നിയമങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റം വരുത്തണം. ആൻഡ് also very strict, harsh, stringent rules to be put in place to control the owners of such domesticated elephants and also the mahouts who take care of them. Thank you very much, sir. Abhinandanam. Ninnai Sanskariku. Please. Sri KRN Rajesh Kumar. Respected Honorable Chairman, sir, thank you for the permit me to speak on implementation of metro rail projects in Tamil Nadu. Sir, Coimbatore is the second largest city by GDP in the state of Tamil Nadu after the capital of Chennai with the population of approximately 30 lakhs. Apart from local traffic, the people from the neighboring district and travels to Coimbatore city for work, education and medical needs. The technically 15 into 20 lakhs people commute daily in the around of Coimbatore for the above purpose. Considering these aspects, the state government of Tamil Nadu proposed for the metro rail project in the Coimbatore city. The feasibility study and detailed project report is completed and the state government of Tamil Nadu had allotted 6,670 crores. So far, the coordination support between the Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India, the state government of Tamil Nadu is remarkable. However, I request the Ministry of Housing and Urban Affairs to provide the central financial assistance as early as possible to initiate the execution of the Coimbatore Metro Rail project.
the fastest growing tier 2 cities in state of Tamil Nadu such as Madurai, Tiruchi, Tirunelveli and Salem also expecting the metro rail options owing to its necessity and economic performance. Kindly consider this project as the state government of Tamil Nadu is eager to implement this project with necessary support in both financial and execution levels. Nandri. Nandri, yeah. I hope that everybody will start speaking in their mother tongue. Sri Arnath Singh Yadav. Please. Arnath Singh Yadav. माननीय सभापति जी, दिल्ली प्रदेश की सरकारी नौकरियों की भर्ती में 1993 के बाद से दिल्ली में स्थायी निवास कर रहे अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों के आरक्षण का लाभ न दिए जाने के संबंध में मैं आपके और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, दिल्ली प्रांत की नौकरियों की परीक्षा लेने वाली संस्था दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग का लाभ केवल उन अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है जिनके परिवार का कोई सदस्य दिल्ली में वर्ष 1993 से पहले रह रहा है। माननीय दिल्ली प्रदेश का राजस्व विभाग वर्ष 1993 के बाद जो लोग दिल्ली से बाहर आकर दिल्ली में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, उनके पास दिल्ली में स्थायी निवास करने के समस्त पहचान पत्र मौजूद हैं। उनकी जाति की सत्यता जांचने के लिए जहां से वह विस्थापित हुए हैं, वहां के सक्षम अधिकारी द्वारा उनके पिता के नाम सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, परंतु दिल्ली के नियंत्रणाधीन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस प्रमाण पत्र को वैध नहीं मानता, जबकि यह प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग ही जारी करता है। महोदय, परिणामतः जो लोग 1993 के बाद से दिल्ली में स्थायी निवासी हैं और जिनके पास प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र है, उनके पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड है, उनकी दिल्ली की मतदाता सूची में उनका नाम है, दिल्ली में स्थित बैंक खाते हैं, इसके बावजूद दिल्ली प्रांत के अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिल रहा है और प्रत्येक भर्ती में उन्हें बाहर कर दिया जाता है। माननीय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हो रहे इस अन्याय को गहराई से देखें और आवश्यक कार्रवाई कर उनका हक उन्हें दिलाने का कष्ट करें। अरनाथ सिंह जी, धन्यवाद। श्री जी.सी. चंद्रशेखर. Not there, can you give tomorrow, sir? Because already is 12 o'clock. Right. Sri Shall I speak, sir? Selva Ganapati. Sir, I'll speak, sir. No. Sir, thank you, sir. Sir, in the country, the cooperative movement. Right. Okay. Sir, in the country, the cooperative movement started with the aim of better living, business and farming. But today, it is sad to note that the motto is going for... Chandrasekhar, conclude. 12 o'clock is question hour. Question. Sir, it will be... Today. Sir, at least give me tomorrow, sir. Please. Don't bargain. You can write to me last again. 2 days it is happening. You can write to him again. 361. This is Chandrasekhar. आपका एक सवाल है. Chandrasekhar, your question. There will be lunch break today. Question number 361. 361. Question number 361. First supplementary, माननीय G.C. चंद्रशेखर जी. Sir, Anganwadi and Poshan 2.0 scheme, umbrella program under ICDS, to which rupees 20,263 crores has been budgeted. Last year's revised estimate was rupees 20,000 crores, which is just 0.5% increase and a decrease by 4,294 crores in comparison with the budget estimated compared to last year. Sir, as per the RTA reply from Ministry of the Ministry, in 2021 November, 33 lakh children are malnourished and global hunger index ranks in India at 101 out of 116 countries. Please put your question. With the growing food inflation, WPI stands at 10.33% and GPI at 5.43%. Please put your question. Sir, how is the department going to handle with a very small rise of budget? Please. To the honourable member to correct the figures that he has quoted with regards to increase in budget. As has been enunciated
time and again in this House, and if the member may so desire to reflect on part B of the answer already given to him, he may see that the budget is increased by 10%. I would, however, like to inform through you, sir, to the honourable member that the portion tracker methodology of digitally tracking the performances of Anganwadis, including measuring our children as per WHO standards, I can share through you, sir, that for the month of February, when over 1 crore children were weighed as per the WHO standards, the number of children found to be SAM children is close to 2%, which is much less than the number that has been enunciated by the honourable member. We have reached out to a third party, which is namely the Indian Academy of Pediatrics, to ensure that these numbers are validated. And I hope the member can, with due respect to him, reflect on the answer given, which is sufficient with regards to the response. Thank you. Second supplementary. Second supplementary, which is very important, madam. Anganwadi workers get the pay of average around 10,000 rupees and helpers around 5,000 rupees, and they work from morning 8 a.m. to 4:30 in the evening. These people, due to the price hike and everything, they are suffering like anything to manage their life. Whether there is any consideration to increase the salaries, madam? Thank you. Which the honourable member seeks to speak of is not a wage but an honorarium. And if one can make the legal distinction between the same has been actually reflected upon by the Honourable Supreme Court. While the Ministry of Women and Child Development, under the aegis of the Government of India, ensures that Anganwadi workers get the honorarium to the tune of 4,500 rupees, along with additional cash incentives and other statutory incentives from the Government of India, we have time and again implored states to do top-ups, which has been done also in the state of Karnataka. And I must here, sir, highlight that apart from these interventions, the ministry periodically reaches out to state administration and tells them that we should not additionally burden Anganwadi workers with additional responsibilities which the district authorities may do from time to time. We have cautioned state governments regarding the same. Thank you. Srimati S. Fangnan Konyak. Vice Chairman, sir. My question to the Minister is whether Saksham Anganwadi will be implemented in Nagaland or not, and if yes, what budget has been allocated to Nagaland? Sir, with your permission, let me compliment the member. Nagaland. We all compliment her. I compliment her and I wish her well for her tenure of service on behalf of the state and my organization, जिसकी आज हम सब स्थापना दिवस मना रहे हैं. Sir, I would like to here highlight to the honourable member that for the state of Nagaland, the Government of India is committed to ensuring that through 3,980 Anganwadis, we help service the needs of women and children who come to these Anganwadis. She asked the question with regards to Saksham Anganwadi. I would like to highlight to the honourable member that we have definitely ensured that Saksham Anganwadi scheme is implemented across the country and also in the state of Nagaland. And for the year 21-22, the Government of India under this project has given to the state of Nagaland close to 15,000 lakh rupees. Thank you. Dr. Kanimoji Sonu. Thank you, sir. Sir, in the COVID pandemic, how was the scheme implemented when there was a total lockdown going on? And during the COVID pandemic, there were more malnourishment in the children. And how was it maintained? There was no census depending upon that in the period of 2021. Thank you. First question posed by Chandrasekhar ji, I have highlighted the recent WHO standard measurements of children, close to 1 crore children across all Anganwadis in the country, which has now highlighted that only 2% children are SAM children, which is possibly an indication. And I would like to here add, sir, that MAM children have come up to 5%, which is, if you look at cumulatively, the number of children in the malnourished category between SAM and MAM is now 7%. And if you look at, sir, the last NFHS data, where the amount of such children is positioned at 19%, in fact, it is a compliment to the efforts of state governments and the collaboration that they've done with us at the Government of India, that you see a decline in that percentage from 19% to now 7%.
However, as I have said earlier, sir, we would like the numbers to be validated by a third party, that being the Indian Academy of Pediatrics. They have been more than supportive of ensuring that this is validated. But this is indicative of the fact, sir, as the Honourable Member sought to know, what is the effect? You see that the effect is a decline in those numbers. And we have, sir, monitored the distribution of take-home ration to the doorstep of close to 9 crore beneficiaries, 7 crore children and 2 crore pregnant and lactating mothers, in collaboration with state governments, and ensured that there is a weekly review with state governments. Thank you. Ramila Ben Bara. उपसभापति जी, माननीय उपसभापति जी, कुपोषण दूर करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। फिर भी आज ग्रामीण क्षेत्र में ट्राइबल परिवार में कई छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो रही है। इसके वजह से कई छोटी उम्र में बच्चे पैदा होने के वजह से उनका मृत्यु हो जाता है, माता का भी मृत्यु कभी हो जाता है, जान खतरे में दोनों आ जाती है। इसके आंकड़े सरकार के पास होंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ, उनको रोकने के लिए कोई आयोजन है, ठोस कदम उठा रहे हैं? धन्यवाद। धन्यवाद। संसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि पोषण अभियान समन्वय है भारत सरकार में 18 भिन्न भिन्न मंत्रालय और विभागों का, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी सम्मिलित है। जो माननीय महोदया ने उल्लेखित किया इस सदन में, वो अपने आप में हम सबके लिए चिंता का विषय है। एक तरफ भारत सरकार पोषण अभियान के माध्यम से विशेषतः ट्राइबल संभागों में भी हमारी बेटियों को, महिलाओं को, बच्चों को हम सुपोषित कर पाएँ, इसका अभियान चला रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो फंडामेंटल इन्होंने प्रश्न किया कि छोटी और नाबालिग उम्र में बेटियों की शादी हो जाती है, इसी के परिवेश में भारत सरकार ने जो एज ऑफ मैरिज है उसमें प्रस्तावना की है, जो दूसरे सदन में लंबित है, उसमें प्रस्तावना की है कि हम बेटियों की शादी की उम्र को बढ़ाएं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 362, श्रीमती शांता छेत्री। Sir, my question is प्लीज माननीय मंत्री जी, नवाब पटेल पर रखा है। पहला सप्लीमेंट्री शांता जी। Sir, through you, what are the steps taken so far to provide quick medical access to accident victims in National Highway? सम्माननीय स्पीकर महोदय, total of 710 ambulances have been deployed of NHI across 732 toll plazas. These ambulances attended to a total of 37,300 calls in year 2021-22. Regarding incident management has been deployed on the national highway stretches, where already we have given the facility of ambulance, crane and route patrol vehicle at 28 toll plaza in West Bengal. The helpline number is 1033 is created for emergency purpose for road users, and now we are developing 6 wayside amenities at every 40 km along national highway and expressway, and more than 600 wayside amenities will be developed across 22 states of country in 2020. Before 2024 we will complete it, and there is a facility for drone landing and helicopter landing. The helicopter ambulance also can be useful because taking that patient to the hospital, it can be possible at due course of time we will take him to the hospital. We are constantly very much worried about the accident rate. We have 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. We are trying our level best that how we can remove the black spots, and actually that is the need of the hour. With the cooperation of state government and people by and large, our main important task is how to reduce the number of accidents in the country. We are working on that line. Second supplementary, Shanta ji. Sir, my second supplementary question is whether the government wishes to involve private hospitals in setting up trauma centers in National Highway. Thank you. Thank you for being very brief to the point. Speaker Mahoday, presently we don't have any scheme for involvement of private hospital, but this is a good suggestion, because actually in our department we are only offering land, and the hospital is going to develop by the public health department. But actually about considering the experience,
it can be a good suggestion. For future, government will definitely consider that. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी, क्वेश्चन बंगाल पर है, तो आपका सवाल बंगाल से जुड़ा है? मेरा अगर नहीं है तो नहीं, हम दूसरे सदस्य। ये सभी से जुड़ा हुआ है सर, जनरल सवाल। प्लीज प्लीज, इफ इट्स ए स्पेसिफिक ऑन बंगाल, प्लीज। माननीय मिस्टर पी विल्सन, योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बंगाल? Which Honourable Minister will answer. Thank you, Chairman, sir. Honourable Minister, how far your ministry is encouraging both state government and hospital sectors for establishment of multi-speciality hospital with trauma care facilities alongside of national highways? Why not a signboard or a display board provided national highways indicating Honourable the P. distance Wilson of ji, the this question hospital? relates to West Bengal, please. No, but he Please. can answer. This is relating Please. to health, life. Please, please. In general. प्लीज, माननीय संजय सिंह जी, बंगाल से संबंधित सवाल। बंगाल जो नियम आप सबने बनाया मैं उसका पालन कर रहा हूँ। बंगाल से संबंधित सवाल। अभीर रंजन विश्वास जी, अभीर रंजन विश्वास जी, अभीर रंजन जी, प्लीज। Thank you, sir. Sir, I would like to know, as per the reply given by the Honourable Minister,